Assalamu alaikum, everyone. Welcome to a very special edition of SadaSchool. Today, we have a very special guest for you, who is a celebrity in the freelancing circles. I'm sure आप लोगों ने इनका नाम वैसे ही सुना हुआ होगा. We are here to learn from him. He has taught almost 4 million students already. I think a few more will learn today as well. So it's Hisham Server, none other than the legend in the freelancing circles that we have in Pakistan, mashallah. Just a brief introduction of Hisham and his contributions to the Pakistani freelancing community. He's the founder of WorkChest, which is a freelance marketplace where buyers meet sellers for digital collaboration and business. Need a logo for tomorrow, maybe perhaps a website development, maybe you want some issues with WordPress or something. You can find a really nice vetted freelancer from this website, WorkChest. He's also the founder of Being Guru, which is basically a freelancing technology and motivational blog covering important tech news, and it's posting daily. So I highly recommend people sign up for this. And also, last but not the least, he is the CEO of Infomist, which is a team of 30 plus competitive designers, developers, business developers with front office in Ireland and back office in Pakistan. Hisham, thank you very much for joining us. I know you're extremely busy. Running 3+ companies is not an easy task. So, of course, your time is really, really valuable. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you, Omer, for having me. And I look forward to having a very meaningful conversation of the one, people remember for a very long time, because that's what the plan is. That's the plan, inshallah. And I think meaningful is a great word because हम दोनों का I think यही focus है कि if we can inspire even one person to start a freelancing journey today, I think that will be a job well done on our part. So let's begin. I think let's begin from the basics. So Hisham, a very basic question. Should Omer Salimullah be freelancing? I don't see any harm in Omer taking up freelancing as a side career. Now, notice the word I have put in there, side career, because I genuinely believe जब तक आप इसको unless and until your work plate gets full, it really does not make any sense to let go your full-time job and pursue freelancing as a career. One of the basic mistakes people in Pakistan end up making is they see the shiny object, they get mesmerized by the US dollars pouring in from the heavens, and then somehow जनाबे अली वो पूरी courage ले लेते थे ना, मैंने जाना है, मैं freelancing करूंगा. अच्छा होता क्या है, कवल चला इसकी चाल अपनी भूल गया, बिकॉज आप बोट को भी जंप कर चुके होते हैं जो कि आपको मंथली सैलरी दे रही होती है एज एन एम्प्लॉय जॉब जब कर रहे होते हैं. सेकंड थिंग इज आप ये समझें कि नो वेंचर would pay dividends overnight. Yes, you can leverage the compounding effect, but again, it itself would take a little while to get the ball rolling. So, मुझे ऐसा लगता है कि not addressing Omer you particularly here, जो भी full time 9 to 5 employees हैं, instead of firing their boss, ये ना करना, by the way, Brandon is a good friend. Instead of firing their boss, there would be better advice to start doing freelancing in their evenings and in their after hours, और फिर जब वर्क प्लेट बढ़ जाए सर जो भी करना करे, जॉब छोड़ेंगे वो मर्जी. Yeah, नहीं, absolutely. I think it's important to be realistic. ऐसी बात नहीं है कि सारी किश्तियां जला के आप कूद जाएं. लेकिन I think that जो हमें सोचना चाहिए एज ए कंट्री इज द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर नौकरियां नहीं हैं, राइट? हमारी इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली इज गोइंग थ्रू एक्सट्रीम चैलेंजेस. ऑफ कोर्स वर्ल्ड प्रेशर्स भी हैं, लेकिन हमारे अपने इंटरनल प्रेशर्स हमेशा से रहे हैं.
एंड देन एक तो नौकरियां इटसेल्फ कम है, ग्रेजुएट्स जो हैं वो लाखों की तादाद से ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल. एंड देन thirdly you've got the fact कि आपकी जो सैलरी है वो PKR में है, which is unfortunately devaluing as well. So उस हिसाब से अगर देखा जाए तो महंगाई बहुत बढ़ रही है. And so I think it's important for everyone who's viewing this to look at freelancing from a different lens. हम I feel because I'm not from freelancing circles, तो हम जो आउटसाइडर्स हैं वो जब भी फ्रीलांसिंग का सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि यार मैं लोगो डिज़ाइन नहीं कर सकता, मैं वेबसाइट नहीं बना सकता, कंटेंट राइटिंग फॉर एग्जांपल मेरे लिए बोरिंग है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, कॉपी राइटिंग मुझे आती नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ. So I think that narrative probably needs to change. People can freelance on any sort of skills that they have. So for example, I'm a senior, financial person in this country. I can consult, right? There are people who are accountants who are earning not a lot of money in Pakistan. They should freelance. Math हर जगह same होती है, balance sheets same होती हैं, right? So that sort of skill can really easily transfer. Even law, I mean British law के अंदर हम operate कर रहे हैं. So if you can kind of become a second line of lawyers in a European country or a European company or a British company, you can earn in pounds as well. So I don't think there's any skill that requires not physical labor but mental labor जिसको आप freelance नहीं कर सकते. तो I think our submission here today is for everybody to kind of go back and अपने गिरबान में झाके देखें कि कौन से आपके पास marketable skills हैं जो कि आप export कर सकते हैं. So Umar, I just got a little stats open, and they are so encouraging that everybody should pick up independent contract servicing or gig economy and then make 2024 their own. Stat मुझे ये कह रहा है जनाब के अमेरिका में 2023 में 2023 in US alone, और अभी एक महीना रहता है, so ये पता नहीं किस वक्त का पब्लिश हुआ होगा, there are over 70 million independent contractors. मैं दोहराई देता हूँ, अमेरिका में इस वक्त 70 मिलियन से ज्यादा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडिपेंडेंट लॉयर्स और अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पूरी दुनिया को दे रहे हैं, एंड दे आर नॉट 9 to 5 एम्प्लॉइज. अब इसमें से 16 मिलियन इन 2023 alone, 16 million gig economy से ताल्लुक रखते हैं. So gig economy is tech oriented services, freelancing, चाहे वो कोई भी skill. So your guess is as good as mine कि ये तो इतना बड़ा समंदर है कि अंग्रेजी में कहते हैं everybody can have their fair piece of pie here. Absolutely. So okay, so let's assume that हमने किसी को inspire किया, Hisham. Right. I don't know if that's true or not, but let's assume that we have. So now they're like all charged up. They're like, ठीक है, मेरे पास एक ऐसा skill है जो मैं export कर सकता हूँ. What is the next step they should take tonight or tomorrow morning? Wonderful. Thank you for asking this question, because what typically happens or has been happening in the country is they've seen my lectures, they've seen other influencers or instructors or mentors lessons or lectures for that matter, और उसके बाद क्या करते हैं, they just pick up their smartphone or sit on laptop or desktop and they create freelancing accounts on different freelance marketplaces, and they just jump in without equipping themselves with the right skill set and with the right mindset. ये दो बातें बहुत जरूरी हैं उसमें उमर. एक स्किल सेट की बात हो रही है और एक माइंडसेट की बात हो रही है. अच्छा, ये मैंने क्यों बात की? After having taught 3.7 million and growing, ये नंबर बढ़ रहा है, number of students on dgskills.pk, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारा बच्चा दोनों फ्रंट पे लैग करता है. The first thing first is, just for a discussion sake, and I was so looking forward to have a conversation with someone who probably does not belong to the industry, तो वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे. And thank you for giving me this opportunity. अच्छा जी, आप फ्रीलांसर नहीं हैं,
आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, what would be the first thing that would help you, make an impact on online? And that first thing is communications. अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे क्रॉस नहीं ना कर सकते उमर, तो बस फिर काम गया। गलती क्या हो रही है? We think we have done reasonably well in equipping ourselves with the right tech skill, but we terribly lack at soft skills such as communication skills, business development skills. बेचना हमें आता नहीं है, हमसे कमाया नहीं जाता। So if I were an aspiring young freelancer, जो चाहता है कि मेरा freelance career जो है वो grow करे, first thing first is work on your communication skills. If you are able to convey, clients or buyers why they should do business with you, why they should give you their money, अभी गेम खत्म। इसको अदर वे राउंड देख लेता हूँ। उमर, आपने कहा कि मैं एक फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ और अगर मैं जॉब फ्रीलांसिंग करना चाहूँ, जॉब छोड़ना चाहूँ, तो मुझे क्या? अच्छा, इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए। You are very good at communication skills. You have a good college degree and you have a good worth of experience on your back. What if I tell you कि आप जाएं freelance marketplaces पे और अगर आपने एक प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, you start bidding on the projects, you start reaching out to the clients, you convince them that you are a right candidate for their job, और फिर जब आपको काम मिल जाए because of your communication skill, आपने पूरी लाइनअप की हुई है स्किल्ड रिसोर्सेज की, चाहे वो वेब डेवलपर हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्लाइंट को क्या सरोकार के आप खुद हैंड्स डाउन हैं कि नहीं? सी, इट्स अ माइंडसेट, इट्स द फर्स्ट थिंग एवरीबॉडी नीड्स टू डेवलप। इसका ये मतलब अब ये नहीं है कि अगर आपके क्रिएटिव थॉट्स चल रही हैं कि हाँ ये तो वाकई सही कह रहा है कि मैं कल जाता और जाके जो है ना साइन अप कर लेता और उसके बाद जो है ना वो मैं लेवरेज करूंगा रिसोर्सेज को। माइंडसेट, first thing first, if you want to become a successful freelancer, you got to develop that mindset जो आपको गोरों से बिजनेस करने में मदद देगा। And that essentially includes your good communication skills, that essentially includes your good business development skills. टेक स्किल तो आती तीसरे नंबर पे, राइट? जैसे मैंने अभी उमर की एग्जांपल दी, मैं दो लोगों से मुखातिब। So then you need to make sure that if you are a hands-on freelancer, please be a subject matter expert. You cannot survive in a battlefield with, without, preparing yourself and going half prepared. 2 सेकंड में अगला आपको टॉपल डाउन कर देता है, आपका कंपेटिटर, बिकॉज वो अच्छा इक्विप्ड है स्किल सेट से, बिकॉज वो अच्छा इक्विप्ड है सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स, और कोई वजह नहीं है कि क्लाइंट उसको अपना पैसा और कारोबार ना दे। आपको वो किस वजह से दे? आपको बोलना नहीं आता, आपको समझाना नहीं आता, आपको बेचना नहीं आता, तो आप जितने मर्जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, मे बी गुड हैंड्स डाउन वेब डेवलपर, कोई भी स्किल्ड रिसोर्स, लेकिन जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, आई थिंक हाफ ऑफ द गेम इज लॉस्ट। तो मेरा ये मानना है इतने एक्सपीरियंस के बाद कि ये गलती की जाती है। अच्छा, अब इसको मैं अपने पे रख के बताता हूँ। Umar, you probably do not know, I was the first Pakistani freelancer who was showcased on Hall of Fame website called Guru.com. I was the first Pakistani freelancer who made over 1 million USD on that platform. ये बात मैं कर रहा हूँ 2008-9 की, जब फ्रीलांसिंग वाज नॉट इवन अ टॉक ऑफ द टाउन इन द कंट्री। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उस स्किल सेट में महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए जिसमें कंपटीशन कम है। अभी एआई की बात हो रही है, आने वाले वक्त में एआर की बात होगी, आने वाले वक्त में मेटावर्स की बात होगी, क्रिप्टो तो अभी पाकिस्तान में बात ही नहीं हो रही, ब्लॉकचेन तो पाकिस्तान में भी बात ही नहीं हो रही। एंड इफ for a discussion's sake, you take 2 steps back and you start talking about, जनाब virtual assistant की सर्विसेज बेचना चाहता हूँ, डेटा एंट्री की सर्विसेज बेचना चाहता हूँ, ट्रांसलेशन सर्विसेज देना चाहता हूँ,
dude, Chat GPT knows far better than you. क्या अपना टाइम जाया करेंगे उसमें? Yeah. So it's not machine that will take over your jobs. It's actually the humans who's better equipped in running machines. अपने आप को emerging and trending skills के लिए तैयार कीजिए. और यहाँ पे एक गेम प्लान है मेरे पास, वो आगे कॉन्वर्सेशन में उसको रोल आउट करेंगे. But I hope I was able to satisfy the question with my answer. It is your soft skills, communication as well as business development. Tech part, it comes later. That can always be outsourced. और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो फुल टाइम एम्प्लॉइज है. देखो, अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो पैसा आपके पास ही जा रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा. आइडियली इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर ऑनलाइन, यू वुड लाइक टू कीप एवरीथिंग इन योर पॉकेट. तो वो तो फिर एक ही तरीका है कि तीसरा जो बॉक्स है वो भी खुद फिल करना है, व्हिच इज टेक स्किल. You got to learn tech skill, you got to practice it, you got to get better at it, and then कम्युनिकेट भी खुद करें, क्लाइंट से कन्वर्सेशन भी खुद करेंगे, फाइनेंशियल एलिमेंट्स भी खुद देखें और काम भी खुद करें. लेकिन ये लंबी रेस का फॉर्मूला नहीं है. अंग्रेजी की कहावत है, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, I think it makes more sense to team up. Yeah, नहीं, absolutely. और अगेन अगर आप सिर्फ खुद ही करेंगे तो you still have a job, you don't have a business. आप फिर भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आप वो अपवर्क, फाइवर पे किसी गोरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर आप फिर भी नौकरी रहे हैं. So I think that if I have to summarize that answer, Hisham, I think what you're saying is that soft skills matter more than hard skills, because for example अगर आप soft skills अपने improve कर लेते हैं तो इन स्किल्स का इस वक्त कमी है पाकिस्तान में. सो पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजी लिखना बोलना इज अ चैलेंज. प्रोफेशनलिज्म इज डेफिनेटली अ चैलेंज इन पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग सर्कल्स. लोग गायब हो जाते हैं, गोस्टिंग शुरू हो जाती है, कमिटमेंट्स पूरी नहीं की जाती. सो आई थिंक वन वे दैट anybody can really stand out without having hard tech skills is becoming the face of, let's say, an agency, like a business. And what you do is then you make sure कि आप जो हैं वो commitments अपनी पूरी करें, आपकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक हो, when you're communicating, punctuations, commas वो बिल्कुल ठीक हो. And again हमने I think chat GPT का जिक्र किया, and maybe in a more of a challenging aspect हमने कहा कि यार आपका काम जो है अब वो chat GPT कर सकता है. But I think what can also help Pakistani freelancers जो कि communication skills में, English writing में struggle करते हैं, is the fact कि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा English का professor at your fingertips अब create हो गया है, which is ChatGPT. So if you're not talking to people online, if you're just communicating in words, तो अब तो आपके पास ChatGPT है कि वो आपकी अंग्रेजी और आपकी grammar और आपकी punctuation ठीक करके आपको वो output दे दे, and all you have to do is just cut and paste. So I think that it is a great time for a lot of people to start thinking about freelancing. And again, वही बात आप भी कह रहे हैं जो शुरू में मैंने की कि don't get caught up in the fact कि मैं तो logo designing नहीं कर सकता, या मैं content writing नहीं कर सकता, या मैं accountant नहीं हूँ. I think what you're also saying is कि figure out कि आप क्या कर सकते हैं. You must have some value. अगर आप आज ये stream देख रहे हैं तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है. You're educated, you have internet, you have either a phone or a laptop that you're viewing this session on. So you are already ahead of 50, 60, 70% of the world, right? So let's not look at जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, या हिशाम भाई तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं कैसे स्टार्ट करूँगा ये काम. I think that everybody should immediately following this session should look at what can I do, and if you don't have any hard skills, why don't you polish up on your soft skills. और जिस तरह से आपने कहा उसकी तो कमी है, and all you need to do is then get that business and outsource it to people. For example, आपके पास एक एजेंसी है जिसको outsource किया जा सकता है, या for example वो जाके अपने circles में ढूंढना शुरू करें तो उनको बेतहाशा hard skills वाले लोग मिल जाएंगे. So I think that's an excellent point that people really should think about. It stands true for every field over. Honestly speaking, you talk about business, you talk about solo flights.
unless and until you are good at what people expect you to, be it communication, be it business development skills, the one who can leverage resources would probably be better off in the future than the one who's more focused on remaining in their silos and be absolutely clueless about the next step. Solo flight, kitni der tak chalegi? Maybe 1 year, 2 year, 5 years. How long can you stay hands down? Umar, you and I, if we go 10 years back, we were probably doing a lot of things on our own. Then there comes a point where that drive sort of like takes a it takes a dip or it diminishes. अब वो जब dip ले गई है तो अब hands down नहीं हो सकता 24 घंटे काम करने के लिए. That's where leveraging resources is very important. That's where entrepreneurial mindset is important. That मैंने ना एक feat achieve कर ली है. Now how about I start empowering people and in the process start making money. तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड जीरो पे रहते हुए तो आपको हैंड्स डाउन होना चाहिए. मैंने सारी उम्र ग्राफिक डिजाइनिंग की है, मैंने सारी उम्र वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन की है. आफ्टर इफेक्ट्स में प्रीमियम मोशन ग्राफिक्स किए हैं मैंने for television and for big production houses. But then there comes a time in your life you just cannot stay hands down because it requires you to sit on your desk 24/7. And that is where leveraging resources comes into equation. Empower others. Make sure that you're good enough to get the best out of them, which is leveraging the resources, using them to your advantage. और फिर आप देखेंगे आप कैसे स्केल अप करते हैं. सो हमने काफी सारे एलिमेंट्स जो हैं इस जर्नी के वो अभी डिस्कस कर लिए. बट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स, प्लीज लर्न हाउ टू टॉक, प्लीज लर्न हाउ टू कन्वे योर पॉइंट ऑफ व्यू across. Please learn how you can upsell your services. Please learn about, learn inside out nitty gritty, details about the skills you have to offer. So that's the game plan. Awesome. Okay, चले फिर अब एक और फिर next step लेते हैं शाम. So let's talk in a lot of practicalities. Let's say realistic on the ground बातें करते हैं हम, right? So अब मैंने figure out किया है कि either I have some sort of hard skill or I have this soft skill, या मैं कुछ अरसे में develop कर लूँगा 1-1.5 महीने में. And now I'm ready. I feel that I'm ready. How do I start sourcing clients now? What is the best or the most effective strategy you feel that most people should follow? I'm sure it's not for everyone, but in your opinion, अगर आप एक young 21, 22-year-old, somebody either with hard skills or with the right soft skills जो आप चाह रहे हैं वो available हैं, तो वो अब क्या करें? What's the next step to get? So the next step, thank you, Omer. So the next step is go to different freelance marketplaces and create your profile. So we got different marketplaces. We got likes of Upwork.com, which is probably the biggest freelance marketplace. Marketplace क्या है? आसान अल्फाज में एक client आता है, projects post करता है, और जो service providers हैं, commonly known as freelancers, वो projects पे bid करते हैं. There are so many different freelance marketplaces. Upwork.com, Guru.com, Freelancer.com, फिर Fiverr.com, जो कि आजकल under heat है because it's an Israeli product. So मैंने इसलिए इसको भी आखिर में ही रखा. But Upwork.com and Guru.com are the Godzilla of freelance marketplaces. When I say they are the Godzilla, it means कि वो बहुत ज़्यादा number of projects जो हैं वो इनमें post. First thing first, if you are an aspiring freelancer, please do not jump on these different marketplaces and create your profile until you have equipped yourself with all sorts of answers you would be required to give when clients post a project. So अगर आप skill set आपका पूरा नहीं है, आप communicate नहीं कर सकते, तो पहले ना जाए. हम ये assume कर रहे हैं, मैं और उमर, कि you can speak reasonably well, you can communicate, and then you've got a reasonably good enough command on your skill set. इसकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ? इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, before I go to the actionable steps, you are a brand ambassador of your country. If a client comes to you and you present yourself with half-cooked knowledge, client will find out
not only they will, they get so put off कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम नहीं ले। आपके कंधों में ना मुल्क की जिम्मेदारी है जब आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे जाते हैं। हाफ कुक्ड प्रेपरेशन के साथ, आधी पिचाड़ी प्रेपरेशन के साथ फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे नहीं जाता। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। सो वी आर एज्यूमिंग कि आपने बोलना सीख लिया, आपने लिखना सीख लिया, चैट जीपीटी की सर्विसेज ले ली, जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक, जो आपकी टोन ऑफ कंटेंट रिस्पांस जो है वो थोड़ा फ्रेंडली कर देती है। और चैट जीपीटी जिंदाबाद। हमारे वक्त पे तो ये होता नहीं था जब ये सारे काम करते थे, हम तो खुद इंग्लिश लिख लिख के सीखी। अब इसके बाद आपकी स्किल भी अच्छी है, मार्केट प्लेस पे गए और प्रोफाइल बनाई है। प्रोफाइल में जो नंबर वन चीज है जो क्लाइंट देखता है वो आपका माजी का काम है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज द वर्क यू हैव डन इन पास्ट फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स। सो इमेजिन, just as an investment towards your prosperous future, you work for free outside marketplace, and you work for free for discussion से दो तीन लोगों की। अच्छा, आप लोगो डिजाइनर हैं, आप गए अपने उस्ताद के पास, सर आपका ब्लॉग होना चाहिए, सर आपका ब्लॉग का नाम क्या है? ओके, सर का नाम है उमर सलीमुल्लाह। चलिए सर मैं आपका लोगो बना के देता हूँ, बड़ा खूबसूरत सा। ठीक है जी, मैंने उमर का लोगो बना दिया। फिर मैं गया, ये यूट्यूब पे हम लाइव हैं, यूट्यूब के मालिक के पास गया डिस्कशन से के लिए, उन्होंने मीम ना बनाने लगे थे, हिशाम सर ने ऐसी बात कर दी। अब मैं यूट्यूब के मालिक के पास गया, मैंने जी आपका लोगो होना चाहिए जी। तीन लोगों के लिए मैंने ऑफलाइन रहते हुए काम किया, अपना पोर्टफोलियो बना दिया, और उस पोर्टफोलियो को मैंने, अच्छा उनको मैं चाहे उजरत लूं, उनको चार्ज करूं या ना करूं, डज नॉट मैटर। ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग इज एन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स द फ्यूचर। सख्त गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में प्यास लगी हुई हो और ठंडे शरबत का दिल कर रहा हो, रोड में आप किसी शॉप में जाते हैं और उसका रेफ्रिजरेटर बंद है, और अगर आपका मनपसंद मनचाहा मशरूब नहीं है, क्या आप उस शॉप से खरीदेंगे? आप नहीं खरीदेंगे। यू जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोर एंड यू गो टू द शॉप नेक्स्ट डोर। क्योंकि आपको दो चीजें चाहिए, एक वो ठंडा होना चाहिए, दूसरा आपका मनपसंद जूस या जो भी ड्रिंक आप चाहते हैं। इसी तरीके से जब क्लाइंट फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे आता है और आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आपके शेल्फ में वो प्रोडक्ट नहीं पड़ी, वो सर्विस नहीं पड़ी, तो आपसे कौन खरीदेगा? वो पोर्टफोलियो। सो आप इन्वेस्ट कीजिए अपने आप पे, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तीन चार लोगों के लिए फ्री में पोर्टफोलियो बना दें। इससे आपको क्या होगा? इससे आपको एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा, पोर्टफोलियो तो बन गया, ये तो जिंदाबाद, बट वो जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, बिकॉज एवरी न्यू रिक्वायरमेंट हैज गॉट अ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस। उमर, you probably would want O in a different way, and YouTube would want O of Y, O U, O in a different way, वो maybe उसमें smiley face जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। So इसका मतलब है कि every requirement has a different set of challenges and you learn in the process। जब मैंने ये तीन चार लोगो बना दिए या तीन चार पोर्टफोलियो सैंपल्स बना दिए, then I'll be advised to take these samples, populate them inside portfolio section of my different marketplaces। चाहे मैं अपवर्क पे हूं, चाहे मैं guru.com पे हूं, चाहे मैं फ्रीलांसर पे हूं, आधा काम तैयार हो गया, दुकान बना दिए, आसान अल्फाज में समझा, और शेल्फ पे प्रोडक्ट्स भी। अब किसका इंतजार है? कस्टमर का। कम अज कम कस्टमर आएगा तो शेल्फ पे कुछ बेचने के लिए रखा हुआ तो है ना। क्लाइंट आ रहा है, आई बॉल्स मिल रही है मेरी प्रोफाइल को, कम से कम उसको ये तो पता है कि मैंने व्हाट हैव आई डन इन पास्ट, द काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस आई हैव। इमेजिन आई हैव, एज अ लोगो डिजाइनर, जो है कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, आई हैव क्रिएटेड लोगो फॉर समबडी इन एजुकेशन इंडस्ट्री, आई हैव क्रिएटेड लोगो फॉर समबडी इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, समबडी इन टेलकोस। डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है जी मेरा, तो बड़ा better equipped to ace over my competitor because of my experience। तो फिर जो क्लाइंट हंटिंग स्ट्रेटजीज हैं, उसमें मैं आप सबके गोशगुजार करना चाहूंगा, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए सतरंगी फॉर्मूला। अच्छा, सतरंगी मैं यूट्यूब पे खुद लिख रहा हूं ताकि आपको समझ लग जाए
ये सतरंगी फॉर्मूला क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स. This is a formula that probably gives you a better chance to gain attention of your potential client. वो कैसे? इसकी जो डिवीजन हुई है ना into 7 paragraphs, वो ऐसे हुई हुई है starting from greetings, which is first line, moving on to the second para. आप क्लाइंट को बताते हैं कि मैंने आपका प्रोजेक्ट देख लिया और उसको समराइज करते हैं इन योर ओन वर्ड. क्लाइंट का जो पूरा प्रोजेक्ट है उठाइए, चैट जीपीटी पे जाइए और उसे कहें समराइज दिस रिक्वायरमेंट इन 2 लाइन्स. चैट जीपीटी बहुत सियाना है, आपसे ज्यादा बेहतर जानता है क्योंकि वो उसका एल्गो ऐसा बना हुआ है. Not only ChatGPT will give you a summarized version of client's project placement, बल्कि वो उसको अंग्रेजी में भी बड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट करेगा, उसकी टोन भी ठीक करेगा. तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया. तीसरा पैराग्राफ में you introduce about yourself. When you talk about introduction, you will be better advised not to over brag about who you are or the kind of skill set you have, but instead talk about your skill set, talk about your proficiency in the software जिसकी सर्विस दे रहे हो. मिसाल के तौर पे लोगो डिजाइनिंग कर रहे हो तो बात करो Adobe Illustrator में मेरी बड़ी ग्रिप है, बड़ी दस्तरस है. वेब डेवलपर हो तो बताओ किस टूल पे वेब डेवलपमेंट करते हो. कंटेंट राइटर हो तो बताओ कैसा कंटेंट करते हो, किस टूल का इस्तेमाल करते हो. So talk about your tools, talk about your expertise, but don't over brag it, because nobody is interested in knowing आपकी तारीफें सुनने के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है. Fourth paragraph talks about the solution, what you can do for the client, and this is by far the most important paragraph in this Satrangi formula. So you again, अब आप क्या करते हैं, वापस चैट जीपीटी में जाते हैं, उसको कुछ प्रॉम्प्ट्स देते हैं. आने वाले वक्तों में ना दोस्तों, कामयाब वो है जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझ जाएगा. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? मशीन को क्या कमांड देनी है कि वो आपका मनपसंद डिजायर्ड आंसर आपको दे. Everybody uses ChatGPT, but nobody, very few know how to get the best out of ChatGPT. Yeah. That's where prompt engineering comes into equation. You need to learn how to use machine to your advantage. तो फिर आप क्या करते हैं, वो जो प्रोजेक्ट प्लेसमेंट है, क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है, उसको कहते हैं कि समराइज कर दिया तुमने, गुड इनफ. अब तुम बताओ कि ये वर्ड्स है. मिसाल के तौर पे लोगो डिजाइनिंग में I'll use Adobe Illustrator to create the rough sketch, and then once you prove the rough sketch, I will fill it with colors and everything, and my final deliverable would be a high resolution print ready output. जब आप उसको ये इनपुट दे रहे हैं ना चैट जीपीटी को, तो वो प्रोजेक्ट प्लेसमेंट को लेते हुए आप क्या कर सकते हैं उसकी अच्छी अंग्रेजी बना के आपको दे देगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आने वाले वक्त में बार बार बोल रहा हूँ, इट्स नॉट ह्यूमंस वर्सेस मशीन, इट्स ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमंस. जो बेहतर इस्तेमाल करेगा ना मशीन का, तो वो बेड़ा पार है. तो उसके बाद आप आते हैं 6th लाइन, व्हिच इज योर पोर्टफोलियो. 6th पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में आप बताते हैं कि यार दिस इज व्हाट आई हैव डन इन पास्ट फॉर सो इंडस्ट्रीज, एंड दैट्स इट. इसी में there has to be a hook, unless and until you as a freelancer. मैंने जब कम्युनिकेशन की बात की तो उसमें मैं उस पॉइंट को एम्फसाइज करना चाह रहा था, which is copyright. You need to create a hook. ख़वातीन भी देख रही होंगी इस कॉन्वर्सेशन को. जब सेल का वक्त आता है उनके फेवरेट अटायर का, तो कैसा हुक क्रिएट किया जाता है स्केर्सिटी का, कैसा हुक क्रिएट किया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस का, कैसा हुक क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ स्टॉक का. ये 3 चीजें क्रिएट की जाती है. लिमिटेड स्टॉक है जी, 2 दिन रह गए हैं जी, और डिस्काउंटेड प्राइस है. अब यहां पे आपने इस प्रोजेक्ट प्लेसमेंट को देखते हुए कोई हुक क्रिएट कर कि फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड ऑफ ईयर भाई मैं आपको 50% डिस्काउंट दे रहा हूं. फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड ऑफ ईयर, हाउ अबाउट आई गिव यू अ फ्री मॉकअप ऑफ योर लोगो. वुड यू बी इंटरेस्टेड इन सीइंग how a rough sketch or a draft of your logo looks like? याद रहे मैं बार बार लोगों की इसलिए बात कर रहा हूँ, लोगो डिजाइनिंग की, बिकॉज इट्स अ कॉमन इंटरेस्ट. मतलब मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ किसी को समझ नहीं लगनी, या मैं फ्लटर डेवलपमेंट की बात करूँ, या मैं पाइथन की बात करूँ, वो थोड़ा सा स्केल हाई हो जाता है. सो you being engaged in this conversation by talking about
कॉमन इंटरेस्ट जो लोगो डिजाइनिंग, हुक क्रिएट करना है भैया, कन्विंस करना है स्केर्सिटी के थ्रू, मे बी आउट ऑफ स्टॉक के थ्रू, मे बी डिस्काउंटेड प्राइस के थ्रू, और उसके बाद फ्री मॉकअप के थ्रू, मे बी गोरा बड़ा अप्रिशिएट करता है when they're done that after having done over 5,000 projects as a freelancer. गोरा जो है वो इतना अप्रिशिएट करता है, कहता वाह, this guy is spending his time in giving me something, knowing I will just refuse his offer. What if I do not like what he has done and I refuse him? He's got everything to lose. He's lost his time that was taken for drafting that particular logo. He's lost his money, जो कि potential money अगर मैं इसको award करता तो मिलता, तो वो बड़ा appreciate करता आपके इस courageous step. बड़ा courageous आदमी है यार ये तो. And that is one silver lining that could probably make you more prominent in responses over your competition. उसके बाद भी closing remarks and looking forward to your positive response and striking taglines before आप thanks करते हैं और अपना नाम लिखते हैं. याद रहे, मार्केट प्लेसेस पे आप अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, चाहे वो आपका फोन नंबर हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका ईमेल एड्रेस हो या आपकी वेबसाइट. So by creating a nice proposal, which actually the motive here is to attract the attention of your potential client, I think you give yourselves a fair chance of getting their attention. अब जरा समराइज करते हैं सारी चीज को एक वर्ड में. क्लाइंट को क्या पता भाई साहब कि मुझे लोगो डिजाइनिंग आती है कि नहीं आती, उसने देखी है मेरी लोगो डिजाइनिंग, पोर्टफोलियो मैंने उमर का उठा के रख दिया है, उमर की इजाजत है, कोलैबोरेशन हो गई है. उमर आप ग्राफिक डिजाइनर है ना, आप लोगो डिजाइन करेंगे, मैं प्रोजेक्ट्स लेके आऊंगा. उमर काम मिल गया ना, तो उसका 50% आपका, 50% मेरा. इस सारे प्रपोजल में व्हाट इज वन थिंग दैट इज वर्थ पेइंग अटेंशन टू? आई वुड लव योर कमेंट्स ताकि मजा आए कॉन्वर्सेशन का. आप सबसे मैं मुखातिब हूं जी. इस वक्त हमें कोई 50 और लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सारे प्रपोजल में एक वर्ड में अगर आप इसको समराइज करें तो क्या चीज थी जो कि प्रॉब्ली आपको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम योर कंपेटिटर्स? जरा आधे मिनट के लिए उमर इंतजार करते हैं, मे बी इफ दे आर काइंड इनफ एंड दे स्टेप इन एंड अपना इनपुट दें वो, बिकॉज वो बड़ा मजा आ जाएगा. उसके बाद मुझे लगता है आधा मसला ही हल हो जाएगा. We don't have to wait. I think people will comment inshallah on that. So again, Fazli says 2 hands are better than 1. एक ने कहा जी परसेंटेज स्प्लिट. मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे प्रपोजल में ऐसी क्या चीज थी जो मुझे मेरे कंपेटिटर्स से डिफरेंशिएट करती है? तो चलिए मैं इसका जवाब खुद ही देता हूँ. जैसे उमर कह रहे हैं कि माइंडसेट. थैंक यू जैन फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट जी. इट्स योर कम्युनिकेशन स्किल बॉस. बात ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बात अगले के दिल में उतर जाए, ना कि उसके दिल से उतर जाए. ये जो दिल में उतरने का और दिल से उतरने का जो फन है ना, इसी को कम्युनिकेशन स्किल है. तभी बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, लर्न हाउ टू कम्युनिकेट. मेरी एक फेवरेट मूवी थी, थैंक यू फनी, का नाम ही टैग ही फनी है तो इसलिए मैं फनी बोल रहा हूं. कम्युनिकेशन स्किल्स. उमर मेरी बड़ी फेवरेट मूवी थी त्रिशूल. कैन वी टॉक अबाउट दिस फॉर अ सेकंड, जस्ट फॉर अ सेकंड? एक डायलॉग है उसका. श्योर. उसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आज मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन मैं 10 करोड़ का सौदा कर. What does this tell us? It tells us कि जब बात करने का तरीका आ गया, you can convince anybody in the world. लोग टेबल पे बिजनेस इसलिए छोड़ते हैं कि उनको कन्विंस करना, और कन्विंस तभी करेंगे ना जब कम्युनिकेट करेंगे. So thank you for giving a minute to talk about this. Absolutely. और अगेन वही बात कि अगेन अभी अगर कुछ लोग हेजिडेंट हैं जो व्यूअर्स हैं और वो कह रहे हैं कि यार आई डोंट थिंक आई हैव दोस सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आप मार्केट प्लेस में हैं तो यू आर कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग, और राइटिंग के लिए आपके पास चैट जीपीटी जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है, इन विच
You can input the right kind of prompt, जैसे हिशाम ने कहा कि थोड़ा सा आपको वो सीखना चाहिए कि मैं लिखूं क्या, लेकिन अगर आप scarcity वाली बात कर सकते हैं, आप limited time वाली बात कर सकते हैं, आप reciprocity वाली बात कर सकते हैं, which is basically giving something for free with the hope, and you know गोरे का दिल काफ़ी बड़ा होता है कि वो जो है वो आपको इवेंचुअली, चूंकि आपने इतनी जाके मेहनत की एंड आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़ फ्री में उसको ऑफर की, तो दे फील कंपेल्ड कि यू नो मैं बिजनेस भी फिर इसको दूँ. सो यू नो फ्री जो अगर आपने कम्युनिकेशन के अंदर ये चीज़ें बिल्ट इन करके भेजनी है एज अ प्रपोजल और एज अ मैसेज, तो चैट जीपीटी आपके लिए 1 मिनट में ये चीज़ बना सकता है, एंड देन यू गॉट द बॉल रोलिंग. एंड देन यू नो सॉफ्ट स्किल्स हो, हार्ड स्किल्स हो आपके पास, यू वांट टू आउटसोर्स, यू कैन. So I think that a few people were asking कि अच्छा यार आपने कहा तो कि मैं मार्केट प्लेस पे चला जाऊँ, but market places are very saturated. But I think what Hisham has mentioned is that there are ways to stand out. These marketplaces generally are saturated by a lot of mediocre freelancers, especially on the communication side. तो अगर आप इनका प्रोफाइल ही देखेंगे तो उस प्रोफाइल के अंदर ही 25 अंग्रेजी के मसले होंगे. ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम फॉर्मेटिंग टू स्पेलिंग टू ग्रामर टू पंक्चुएशन. सो जब गोरा इस चीज़ को देखता है तो उसको बड़ी फौरन नज़र आ जाता है कि यार इसमें यू नो एक इशू है. अगर ये अपना प्रोफाइल ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर सकता तो मेरा प्रोजेक्ट किस तरह से मैनेज करेगा. आई एम यू नो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मेरे पास अगर कोई सीवी आता है जिसमें एक डॉट गलत लगा हुआ होगा ना हिशाम, तो दैट इज अ इमीडिएट फेल, इमीडिएट. लाइक आई डोंट केयर कि आप लम्स के पढ़े हुए हो, आई डोंट केयर आप हार्वर्ड के पढ़े हुए हो, आई डोंट केयर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो. इफ यू कैन नॉट इंश्योर दैट योर वन पेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू हैव इन योर उमर में लाइफ, हंस पता क्यों रहा हूँ, सॉरी टू कट यू है, हो. हंस क्यों रहा हूँ? हाँ. कराची की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके ग्रेजुएट ने आज ईमेल भेजी और सब्जेक्ट में उसने अपनी कहानी सुना दी, फ्रीलांस का. या मतलब आपने 4 साल उसकी दुर्गढ़ बनाई है और उसको आपने ये नहीं बताया कि कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है. तो मेरे नजदीक तो वो 4 साल जाया हो गया ना. या सो हम लोग मार खाते हैं डेफिनेटली इंग्लिश कम्युनिकेशन में, राइटिंग स्किल्स में. जैसे आप यू नो अगेन फिर लोग कहते हैं कि जी वो सैचुरेटेड है, वो सैचुरेटेड है विद अ लॉट ऑफ मीडियोकर यू नो सॉफ्ट स्किल्स पीपल. आप इन्हीं टिप्स से जो अभी हिशाम ने दी हैं, आप अपने आप को वेरी क्विकली स्टैंड आउट करा सकते हैं. सो व्हाट हैव वी डिस्कस सो फार. सो पहले तो माइंडसेट अपना ठीक कर लें कि यार मेरे पास ऐसा स्किल है जो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ. नंबर 1, फर्स्ट फाइंड आउट कि आपका पैशन क्या है. ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप कुछ अरसे बाद वैसे ही गिव अप कर देंगे, राइट. सो फिगर आउट कि आपके पास स्किल है और पैशन है उस एरिया का या नहीं. वंस यू फिगर दोज थिंग्स आउट, एंड प्रीटी मच एवरीथिंग जो दिमाग से हो सकती है इज एक्सपोर्टेबल. ठीक है, सो बी क्रिएटिव अबाउट दीज थिंग्स. उसके बाद आप अपने यू नो पोर्टफोलियो बनाएं और अपने लिए टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करें. आई थिंक वन थिंग वी मे हैव मिस्ड, इसके पोर्टफोलियो का मकसद ये है कि हम रिव्यूज गैदर करें फ्रॉम अदर पीपल. तो आई थिंक हशाम आपने कहा था कि अबाउट मी में ब्रैगिंग आपने नहीं करनी है, दूसरे लोगों से करवानी है. सो द फॉर एग्जांपल आज मतलब सादा पे जो ग्रो किया है वो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ग्रो किया. आप अगर देखें तो हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया पेड मार्केटिंग पे, एंड विद इन 20 months वी आर मोर देन 1 million ऑनबोर्डेड यूजर्स विद कंप्लीट वर्ड ऑफ माउथ. बिकॉज यू नो हमारी जो भी मार्केटिंग हुई है वो किसी और ने हमारी तारीफ की है. हमने कभी अपने मुंह मियाँ बिट्ठू नहीं बने. सो इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग ए वैल्यूबल फ्रीलांसर ऑन दिस मार्केट प्लेस जो कि डिफरेंट है दूसरों से, आप इतने टेस्टिमोनियल्स होपफुली खड़े कर लें जिससे आपके लिए सोशल प्रूफ क्रिएट हो जाए. सोशल प्रूफ का अगेन मतलब ये है कि दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, दूसरे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, जिनके लिए आपने इनिशियली फ्री में काम किया उन्होंने आपके लिए तारीफ की चीज़ें लिखी हैं. सो पहले कुछ प्रोजेक्ट्स तो आपने 100% हिशाम फ्री में ही करने आइडियली, और आपका मकसद सिर्फ बिल्ड करने के लिए, पोर्टफोलियो बिल्ड करने, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए और रिव्यूज गैदर करने के लिए. सो हाँ, लेकिन वो मार्केट प्लेस पे नहीं काम करना, आउटसाइड मार्केट प्लेस. आउटसाइड मार्केट प्लेस पे वो पोर्टफोलियो लेके जाना है ताकि आप प्रोजेक्ट्स पे बिल्ड करने के लिए कुछ यू नो यू गॉट समथिंग ऑन योर बैक. सो पोर्टफोलियो ऑफलाइन बिल्ड होगा. मैंने बताया ना एजुकेशन इंडस्ट्री एग्जांपल दी या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एग्जांपल दी. सो दैट्स हाउ यू यू नो इक्विप योरसेल्फ विद द राइट स्किल सेट बिफोर यू एंटर द कंपटीशन. एब्सोल्युटली. और अगर किसी के माइंड में है कि यार मैं ऑफलाइन कैसे बिल्ड करूं इस चीज़ को,
Another very powerful tool is LinkedIn, राइट? सो आपके पास दुनिया का एक्सेस है लिंक्डइन में, आप डायरेक्टली लोगों को डीएम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट डू इट, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एंड अप यूजिंग दिस एज एन एग्जाम्पल, बट अगर आप कल मुझे मुझे एक डीएम भेजें कि उमर भाई मैं आपके लिए एक फ्री 1 पेज वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जो मैं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए सेटअप करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो अराउंड 1 पेज पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट्स. ठीक है, और ये मैं आपके लिए फ्री में करूंगा, आप मुझे बस ये कुछ हाई रेस तस्वीरें भेज दें और 4 दिन बाद मैं आपको ये चीज़ बना के भेज दूंगा. इट्स अ नो ब्रेनर, व्हाई वुड आई से नो टू दैट, राइट? सो 6 7 10 लोगों को ऐसी चीज़ बना के आप दे दें, टेम्पलेट भी मिल जाती है आपको, यू डोंट हैव टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू गेट दिस डन. लेकिन येस, थोड़ी सी मेहनत इनिशियली आपको करनी पड़ेगी. उमर सलीमुल्लाह का आपको रिव्यू मिल जाएगा, हिशाम सरवर का आपको रिव्यू मिल जाएगा, XYZ इंसान का आपको रिव्यू मिल जाएगा. Take those reviews and that work on Upwork, write a good profile based on the tips and tricks that ChatGPT gives you, and bing bang boom, आप 95% जो मीडियोकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका टाइप के प्रोफाइल्स हैं, उनसे आप डिफरेंट ऑलरेडी हो गए. सो दीज आर ऑल डूएबल थिंग्स गाइज. आप लोग जो हैं वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं इन माई ओपिनियन. थिंग्स आर एक्चुअली वेरी सिंपल. सिंपल का मतलब आसान नहीं होता है. इट डजंट मीन देर इजी, बट दे आर सिंपल, दे आर सादा. स्ट्रीमलाइंड. या एब्सोल्युटली. स्ट्रीमलाइंड. या यहाँ पे एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो. मुझे मुझे समझ ये लगी है कि इस सारे प्रोसेस से आफ्टर डूइंग freelancing myself and then empowering millions of Pakistanis, alhamdulillah, over the years, मुझे एक बात समझ लगी है कि लोगों को ये समझना है कि there is no shortcut to success. Rome was not built in one day. It took J.K. Rowling's 12 attempts before Harry Potter was published. It took Michael Jordan to miss thousands of shots before becoming an NBA champion. If you want to become a champion of your field, if you want to become a subject matter expert of your field, you got to realize that unless and until you put hours of efforts into that thing, which probably would make you best of the best in your field, success is a far cry. कामयाब अगर इंसान बन जाए तो कामयाबी झक मार के कदम चूमती है. लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हैं किसी भी स्टेप पे, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो अपस्किलिंग योर बिजनेस एज अ बिजनेस डेवलपर, या वो आपकी हैंड्स डाउन स्किल है, या लेवरेजिंग योर रिसोर्सेज टू गेट अ जॉब डन, यहाँ पे वेरिजोन का जो ओनर है रिचर्ड ब्रांसन उमर, बड़ी प्यारे उसका एक कोट है. वो कहता है कि इफ यू आर एक्सटेंडेड इन एन अपॉर्चुनिटी, डू नॉट से नो, इंस्टेड से यस and find out how you can get the job done. और जब मुझे इस बात की समझ लगी ना, तो then I realized that we are actually, we take the wrong foot forward on the door. It's not the technical skill. Of course, it will come into equation when the deal gets close to being matured. But before that, it's all your communication skill. It's all your business development skill. टेबल पे दो आदमी बैठे हुए, क्या पता क्या लेके आ रहे हैं, मतलब गाड़ी भी रेंट के लिए आया हो, कुछ भी लाया. I'm not saying this just to drive your attention to another perspective. My point here is, टेबल पे बैठ के 2 मिनट में पता लग जाता है कौन कितना कोरा कागज है और कौन कितना भरा हुआ कागज है. और कोरा कागज जाहिर है, on their back they do not have any kind of experience. On their back they do not have any kind of strength. But एक भरा हुआ कागज, एफर्ट लगी हुई है. And when you sit on a table with somebody, जो आपको पैसा देने जा रहा है ना बॉस, वो गोरा है, वो आपको अपना डॉलर ऐसे हाथ में नहीं थमाएगा जब तक कि वो मुतमईन हो जाए कि you are a right candidate for their particular job. Thank you, मरियम, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का जी. Thank you, मोमिन जी, बहुत शुक्रिया जी. I think it's a great time for us to move into these comments, into the Q&A section. Hopefully, आप लोग अपने comments में सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों को कुछ value मिली है अब तक के session से. Would love to hear yes or no, Y or N.
फिर I उमर कब guess. स्टार्ट करते फ्रीलांसिंग? Sorry, मैं कब स्टार्ट करूंगा फ्रीलांसिंग? नहीं, you really inspired me. um, मैं करूँ ना करूँ, I think that I have children. So my eldest is 12 years old, almost 13 now. अच्छा, um, माशाल्लाह. they मतलब he will definitely be encouraged. Not forced, आजकल आप किसी चीज़ को force नहीं कर सकते, but he will be encouraged and exposed to the world of freelancing. Because again हिशाम, उसके अंदर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप hopefully अपने पैशन को pursue कर सकते हैं. वही That बात is कि very ज़बरदस्ती important. करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के ऊपर जुल्म करने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट pursue your passion. राइटिंग पैशन है, राइटिंग कर लो. डिज़ाइनिंग पैशन है, क्रिएटिव टाइप के बंदे हो, वो कर लो. कोडिंग है, कोडिंग कर लो. कॉपी राइटिंग टाइप की सिनेरियो है, वो देख लो. हज़ारों चीज़ें हैं इन विच यू कैन रियली रियली गो डीप. एंड ऑल यू नीड इज़ लाइक 6 to 12 months टू बिकम अ मास्टर एट इट. आई थिंक लोग बहुत ही जल्दी, एक तो खैर स्टार्ट ही नहीं करते. 90% पीपल हु थिंक अबाउट इट, आज जो बैठे हुए हैं वो हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं यार बातें ज़बरदस्त है, येस आई एम गोना डू इट. वो रात को खाना खाएंगे, सुबह उठेंगे, भूल जाएंगे, या दे विल टॉक देमसेल्व्स आउट ऑफ इट कि यार देखा जाएगा, अभी तो मैं ज़रा देखूं कि नौकरी कैसी है, क्या करना है, सुबह एग्जाम है, टेस्ट है, लाइक है, जिंदगी आ जाएगी बीच में. सो मोस्ट पीपल विल नेवर स्टार्ट, एंड दोज हु स्टार्ट, आपने तो खैर ये दुनिया बहुत करीब से देखी हुई है, विल गिव अप वेरी क्विकली. बिकॉज शुरू में तो जाहिर बात है आपको धक्के लगेंगे. आप कोई भी धंधा करें, आज सादा पे स्टार्ट हुआ है, सादा पे के इनिशियल डेज बहुत मुश्किल थे. आप आज जाके एक रेडी खड़ी करें, कोई रेस्टोरेंट खोलें, आपके इनिशियल दिन बहुत मुश्किल होंगे. हो सकता है आप सर्वाइव ही ना करें और आपको वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़े. लेकिन आफ्टर अ लिटिल वाइल, आई वुड से 6 to 12 months ऑफ कॉन्स्टेंट एफर्ट, भले वो फ्रीलांसिंग में हो या रेस्टोरेंट बिजनेस में हो या किसी दुकान में हो या सादा पे में हो, आपको जाके रिजल्ट्स नजर आना शुरू होंगे. सो फ्रीलांसिंग में आप 2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद क्यों गिव अप करना चाहते हैं, राइट? यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप इन करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो, और तमाम दोस्तों को कहूंगा कि जाएं और YouTube पे सर्च करें ब्राउनी वेयर. ये एक ऑस्ट्रेलियन नर्स है जिसने किताब लिखी, 5 Regrets of the Time. She was appointed in a ward जिसको ICU कहते हैं, जो कह लो, CCU कह लो, where patients from terminally ill diseases were suffering. मतलब 4th stage बीमारियां जो कि क्योरेबल नहीं थी, एज प्रॉब्लम्स. तो इसने क्या किया, उसने कहा फारिग हूँ, इस वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, हाउ अबाउट आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं मकरूज हूँ आपकी मोहब्बतों का, बिग फैट यस ऑल द वे. तो बहुत बहुत शुक्रिया, यही करने आया था कि कोई वैल्यू ऐड कर जाऊं और कुछ फायदा हो जाए. क्योंकि जैसे उन्होंने आगाज में बोला कि एक एक बंदे की भी अगर हमने मेंटल कंडीशनिंग ऐसे कर ली, टू टेक अप यू नो and start working on their mindset. We've done our work जी, कोई मसला नहीं. तो वो ब्राउनी ने किताब लिखना शुरू कर दी और उसने नोट्स लिखना शुरू कर दिए. तो 5 Regrets of Dying, जाइए, आई एम नॉट गोना स्पॉइल द फन हियर, बट देयर इज द वेरी वेरी फर्स्ट रिग्रेट जिसका मैं तस्करा करूंगा ब्रीफली, और वो ये है कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ. तर्जुमा कर देता हूं, काश मेरे में इतनी हिम्मत होती कि मैं वो जिंदगी जीता जो मैं जीना चाहता था, ना कि वो जिंदगी जो लोगों ने मुझसे गुजरवाई. जिंदगी गुजारते सभी हैं बॉस, जीता कोई कोई. और वो पॉजिटिव स्ट्रेंथन माइंडसेट वाला जो ये समझ लेता है कि यार आई एम गोना ब्रेक द मेंटल बैरियर्स दैट सोसाइटी हैज पुट अराउंड मी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एज अ यंग किड. स्कूल में सवाल नहीं पूछने दिया, एक लकी कान के नीचे दोस्त ने डिच कर दिया, फलां टमका, फिक्स माइंडसेट सराउंड किया हुआ है, चाहे वो घर वाले हो, इमीडिएट फैमिलीज हो, या आपका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो. And then for you to break those mental barriers takes a lot of men of you. और ये खाली मर्दों के लिए ये कहावत नहीं है, ख्वातीन के लिए भी है. इंटरनेट आपको इज्जत के पैसे कमाने का पूरा मौका देता है. घर में बैठिए, स्किल सेट सीखिए, ना घर से बाहर जाना है, पूरी दुनिया आपकी दस्तरस, अपनी सर्विसेज बेचिए, जो सारी स्ट्रेटजीज और हमने तरीके बताए. And the sky is the limit. So my point here is, please live a life you're worthy living of.
rather than living a life जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. ये क्या मजाक है? जीना तो एक दफा पूरा जियो. Break your mental barriers. It's all about your mind. Awesome. Great words, Hisham. I think we have a question. Is it recommended to invest in SEO, establish a personal website, and create business social media accounts with advertising to attract clients in the initial stages? Hisham will maybe want to answer it, but it's a किसी ने लिखा था big fat yes, but I would say a big fat no. नहीं मैं जवाब देता हूँ. मैं सिर्फ थोड़ा सा कॉर्पोरेट साइड से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फिर आप ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग साइड से टेक ओवर कर लीजिएगा. मेरे हिसाब से ये बिजी वर्क है. इट सीम्स लाइक इट विल you'll think you are making progress, but you are not any closer to a sale than you were yesterday. आप सेल करने से और क्लाइंट डीलिंग से भाग रहे हैं अगर आप चीज़ों को परफेक्ट करने में लग जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल हिशाम, मैंने अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ा देखा है कि लोग जो हैं वो लेटर हेड्स बनाना शुरू कर देते हैं बिजनेस खड़े करते ही, विजिटिंग कार्ड्स बड़ा वो अपने परफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, लीगल चीज़ों के अंदर बहुत पड़ जाते हैं कि यार मुझे कंपनी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खड़े करनी है, इवन तो बाद में जाके भी चीज़ें सीधी हो सकती हैं. लेकिन दे वेस्ट सो मच टाइम फ्रॉम थिंकिंग टू देयर फर्स्ट डॉलर या फर्स्ट इनकम दैट it's just a real waste of time. एंड आपको जब तक आपको क्लाइंट से डॉलर्स नहीं मिल रहे ना, आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी वैल्यू मार्केट प्लेस में कहां तक पहुंच गई है. सो द मोर यू वेस्ट टाइम, द लेस यू नो अबाउट हाउ यू आर डूइंग, कहां तक पहुंचे आप. ओवर टू यू हिशाम. वो एक्चुअली सवाल आपका जवाब बिल्कुल मुनासिब है, और वो सवाल थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एंगल किया गया था. वो सवाल ये था कि मैं फ्रीलांस मार्केटप्लेस पे काम करने के साथ साथ एसईओ पे फोकस करके अपनी वेबसाइट खड़ी कर दूं ताकि वहां से मुझे एक लीड्स मिल जाए. वो ये सवाल था एक्चुअली. सो इसका जवाब ये है कि यस कर लीजिए, बल्कि मेरे ख्याल में जितनी जल्दी आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं उतना ही बेहतर है. आप वेबसाइट बनाइए, आपका लिंक्डइन अकाउंट जैसे उमर ने बताया बहुत जरूरी है, बनाइए. उस पर अपना कंटेंट पॉपुलेट करें, बी इट योर वीडियोस, बी इट योर पिक्चर्स, or be it your textual post. The best way of growing on social media is to educate people. So if I am a logo designer, हमें एक common example को लेके चलें. How about I talking about short keys you can use in Adobe Illustrator? And when I start creating content, educating people, there's a good chance that I'm taken as a subject matter expert, and that actually adds the value in others' people would probably contact me for their business related queries, inquiries. So SEO website होगी तो होगा. अब SEO के लिए you give yourself a fair shot 12 months. थोड़ी देर पहले कमेंट होगी गया इधर ही लाइव में, एक बंदे ने कहा मैंने पिछले साल वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट का नतीजा ये कि मुझे डायरेक्ट लीड्स. नॉट श्योर इफ दैट जेंटलमैन इज स्टिल अराउंड. इफ यू आर, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट. मैंने आई जस्ट saw that in your comment section. साल हो गया and he said I'm doing reasonably good. Marketplaces saturated है. ये एक बड़ी बात याद रखिएगा. Marketplaces requires you to be the best in soft skills as well as in your tech skills or leveraging your resources. But when it comes to direct branding, imagine you have your website and imagine your website is search engine optimized, and imagine people Googling a keyword and then finding your website and then clicking on it, and then they see your past work, which is your portfolio. They get to know about who you are, about us kind of information, services. They're better destined to click on that contact us form. और यहाँ पे you are bypassing the competition, जो कि marketplaces का, Upwork, Guru.com, Freelancer, कोई भी हो. दूसरी बात याद रखिएगा कि चाहे इसको माने या ना माने, मार्केटप्लेसेस में यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यू प्रोपोजिशन व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग. क्योंकि अगर आप कंपेटिटिव प्राइस रखते हैं तो मंडी है, अब उस मंडी में जिसकी प्राइस कदर बेहतर होगी. गोरा भी सवा से होशियार हो गया भाई साहब, उसको भी पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ये फ्रीलांसर्स यहाँ पे बैठे हैं, अच्छा काम करने वाला तो डायरेक्ट ब्रांडिंग पे काम कर रहा होगा. आई एम नॉट ऑन मार्केटप्लेसेस फॉर गुड ऑन 2 years. मेरा दारा छोटा छोटा काम कर रहा है,
So I'm leveraging the social resources such as LinkedIn. I've got my website. इसके बारे में मैं बेशुमार कंटेंट बना चुका हूँ. They are SEO focused और काम मैं वहां से ले रहा हूँ. वैल्यू प्रोपोजिशन when it comes to pricing मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा. अगर मैंने पर आवर $120 चार्ज करना है तो मैं $120 फॉर अ डिस्कशन से. ये ना समझना कि आप भी यही कर सकते हैं. इधर 24 साल का तजुर्बा है. 1998 and this is 2023 about to come to an end. So मेरा जो ये 24-25 साल का तजुर्बा है, of course मैं earned it to charge this premium dollar per hour. अब अगर इसी 120 को मैं लेके जाऊं ना मार्केट प्लेसेस पे, लेकिन दिमाग खराब है मुझे हायर करे जब साथ वाला कंपेटिटर $20, $15, $10 पे काम करे. This is why I'm so pushy about direct branding. This is why I'm so pushy about your personal development. अगर आपको अपनी वैल्यू का एहसास हो गया ना, उसके बाद आपको अच्छे दाम कमाने से कोई नहीं रोक सकता. इसकी एग्जांपल कैसे हो? अगर कोई नोट दो यार, कोई पैसे दो, एक खाली पेपर दो, इस तरह इनको ज्यादा अच्छे से समझ लग जाए. ठीक है, एक जरा सादा पेपर देना और एक नोट फिल देना क्विकली. ये दोनों कागज है बॉस, सबसे मुखातिब हूं. जस्ट इतनी माशाल्लाह आप देख रहे हो, ये दुनिया मांगती है, ये कोरा कागज है दोनों ही कागज. मैटर ये करता है कि आप अपनी वैल्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करवाते हैं दोनों ही कागज. कैसे आप अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज कराते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. पर्सनल ब्रांडिंग, equipping yourself with the right skill set, soft, and then not compromising on the value proposition would help you go places. तो वेबसाइट होना बहुत जरूरी है. फोकस ऑन इट्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. लिंक्डइन पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए. लेकिन लिंक्डइन पे फेसबुक वाली गलतियां क्यों करते हो? मैं जब देखता हूँ ना लोगों की प्रोफाइल्स, लिंक्डइन पे क्या गड़बड़े करते हैं. फेरी मेडल पे खड़ा हुआ है, हाथ खोल के शाहरुख खान बना हुआ है. बिजनेस प्लेटफॉर्म यार, B2B and B2C, business to business, business to consumer. You are supposed to talk about who you are and what kind of value you can add to your acquaintances. आप जब तक वीडियो में ये नहीं बताएंगे कि how you can educate people, वो जैसे लोगो डिजाइनिंग की मैंने बात की, शॉर्ट कीज, जस्ट टिप ऑफ द पिरामिड. बहुत सारी चीजें जिनकी वीडियोस बन सकती हैं. कलर ग्रेडिंग क्या होती है, CMYK क्या होता है, RGB क्या होता है, लिस्ट गोज ऑन. इस प्लेटफॉर्म पे जिसको दुनिया लिंक्डइन बोलती है, खुदारा अपने काम के बारे में बात करें, हैशटैग्स का इस्तेमाल करें. कल मैंने देखा जी उमर, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो दिस, लेट्स कनेक्ट की मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो 2 साल पहले मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट की. अब उस हैशटैग लेट्स कनेक्ट के 50,000 फॉलोअर्स लिंक्डइन पे और ज्यादा गोरे यूज करना शुरू हो गए टू मेक कनेक्शंस. और कल मैंने एक पोस्ट पे कमेंट किया, मैंने दिस दिस हैज मेड माय डे to see this discussion going beyond our shores and our boundaries and going to different countries tells me that you cannot underestimate the power of internet. Sooner you realize how powerful you are and how you can leverage the internet based opportunities, better you are destined to ace at that particular field. So I hope ये बड़ा समराइज किस्म का जो है वो मैंने जवाब दे दिया. Absolutely. I think this would be our last question. Ibtisal Mariam ने पूछा है, does guest posting have any scoop in the future? So Ibtisal देखिए, sorry, अंग्रेजी जो है ना वो incorrect है अभी. So देखिए, it's not to shame anybody, वो हमारी natural language नहीं है तो इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन वही बात कि आपके पास चैट GPT है, आप उससे इसको गुजार के इसको बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश में हमारी तरफ भेज सकते हैं. सो गेट इन दैट हैबिट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमें अंग्रेजी परफेक्ट नहीं आती. मैं भी उर्दू में सोचता हूँ और इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट करता हूँ, फिर जाके मेरी अंग्रेजी गोरों की लेवल की तो नहीं है. आई ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इवन व्हेन टाइपिंग और स्पीकिंग. लेकिन इस आदत में आ जाएं आप लोग के व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश एंड कि इंग्लिश परफेक्ट नहीं है इस वक्त, तो चैट जीपीटी के थ्रू उसको एक दफा गुजार लें. सो डज गेस्ट पोस्टिंग हैव एनी?
जी Hisham. It surely weighs in a long way. तो बिल्कुल करें जी guest post. I think the answer to all of these questions around कि जी किसी ने पूछा डिजिटल मार्केटिंग का क्यों फ्यूचर है like what other marketing का फ्यूचर है यार और किस चीज का मैं फ्यूचर जवाब है दूं जी इसका अगर एक सेकंड के लिए. गो फॉर इट Hisham. हर फील्ड का फ्यूचर है. हर फील्ड का स्कोप फ्यूचर है. आपका स्कोप आपका अपना है. आप अपने काम के कितने अच्छे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है. आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. टेबल पे जब दो बंदे बैठे कारोबारी डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन कितनी वैल्यू रखेगा. एंड दैट इज वन फंडामेंटल business rule for conducting a deal or materializing a deal. कि यार आप वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं. हर फील्ड का स्कोप है. आपका स्कोप है कि नहीं, ये डिटरमाइन कर लीजिए कि आप उस चीज में कितने माहिर. Awesome. On that note, Hisham, thank you very much for your time. लोगों ने तो बहुत सीखा definitely, लेकिन मैंने भी बहुत सीखा. I am super inspired by this conversation, definitely. Thank you for your time. Thank you everyone for attending this. Really appreciate जो आप लोगों ने सवालात पूछे, जो participation की. Clap for you, sir. Very well said, Sir Hisham. I agree 110%, Sir Hisham. Really well said. Thank you so much, everyone. Inshallah, we will see you for another session of Sada School Talks very, very soon. Thank you, Hisham, again. Thank you, everyone. Please take care of yourself. Allah Hafiz. Thank you, Omer, for having me on your show and for giving me a chance to have this meaningful conversation. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.